Subscribe this channel by pressing this button for being updated from Biomedical and Healthcare Society. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एंड इसमें हम लोग आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल रोल्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के जो हमारे टॉपिक है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, एंड वी गोना स्टडी अबाउट मैनेजर रोल्स, वी गोना स्टडी अबाउट मैनेजर स्किल्स। सो देखते हैं क्या क्या है इसमें और क्या कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी हमें समझना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ओके, वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो इन दैट वेरी फर्स्ट पॉइंट वी आर गेटिंग दैट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। मीन यूनिवर्सल प्रोसेस क्या पॉइंट हो जाएगा ये इनके लिए? Means whatever these people are doing, whatever the management people are doing in the organization, basically they work together, right? The very first thing, they work together. Second point I would like to mention that they work in a manner so that anybody can follow that particular process. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको functions of management पढ़ाया था और मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, like very first they used to do the planning for any task, then they used to organize the plan. Further, they used to lead and control, right? Planning, organizing, leading and controlling. ये चार functions को follow करके they used to achieve any goals, whatever goals they are fixing, right? So अगर हम बात कर रहे हैं right now, we are talking about universal process, ठीक है? तो universal process of management क्या कर रहा है? Organization के किसी भी काम को एक universally followed up किए हुए तरीके से solve कर रहा है, right? ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कोई नया तरीका, कोई अजूबा कुछ तो भी हो रहा है। फिर फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स बट इम्प्लीमेंटेशन वे इज डिफरेंट। ओके, और इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन उन लोगों ने दिया है, जो मैं बोलूँ बुकिश डेफिनेशन उन लोगों ने दिया है, बेसिकली इट इज द मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, राइट? Thus it is universal in nature, right? It is universal in nature. The principle and techniques of management have universal application. They can apply to any type or all type of organization. What they want to say that what they actually mean to say, this can be universally applied to any organization, or we can say all type of organization. What it is, the universal process of management, right? It's a universal process, means आपका जो मैनेजमेंट करने का तरीका है चीजों को, इट्स यूनिवर्सल, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है इसमें, राइट? इट्स यूनिवर्सल, एनीबडी कैन फॉलो इट, एनीबडी कैन अचीव इट। लाइक जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि मैंने जो चार प्रोसेस बताए थे आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार प्रोसेस करके आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड दैट यूनिवर्सल प्रोसेस इज फॉलोड अप बाय द मैनेजमेंट पीपल। सो दैट इज व्हाई इट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट वी आर हैविंग। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, आई होप आप समझ गए। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। What is our next point? They are goal oriented. Why I am saying like this? Why people, the management people are totally focused on their goal, right? जो भी उनका टास्क होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में regarding the recruitment of students, like or I will say like bulk recruitment of students by various companies. Like they are having the focused goal. ठीक है, उनका एक गोल फिक्स है and as per that focused goal they are working. Right? And what management people want, like your goal should be same as the organization goal. Okay, your goal should be same as the organization goal. So in this way what will happen, आप गोल ओरिएंटेड हो जाओगे। किसके गोल ओरिएंटेड हो जाओगे? कंपनी का गोल जो है उसके ओरिएंटेड हो जाओगे। इससे क्या फायदा होना है? इससे ये फायदा होना है कि कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, अपना गोल इजीली अचीव कर सकती है, राइट? व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, कंपनी इज इजीली एबल टू अचीव द गोल, राइट? व्हाटएवर गोल दे हैव फिक्स। सपोज करते हैं एक टारगेट फिक्स किया है उन्होंने कि आज से लेके डाउन द लाइन हम देखा जाए तो 1 मंथ बाद अगर हम देखते हैं कि 1 मंथ का टारगेट फिक्स किया है कि उनको 100 मशीन्स बेचनी है, राइट? तो दिस इज अ गोल फॉर द शॉर्ट टर्म गोल फॉर द कंपनी, राइट? And what they will do, they will ask their employees to be focused on it, right? And they will organize it
अगेन वो चार जो मैंने पॉइंट बोला है ना आप लोगों को, वो चार पॉइंट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। वेरी फर्स्ट इन दैट प्लानिंग, they will do the planning for selling of those 100 machines, then they will organize that particular plan, how they're going to sell it, then they will lead to it, they will walk through on that particular plan to sell it, then they will control their emotions and they will control the situation which are making any kind of problematic situation regarding selling those equipments, right? This is how they are being goal oriented. That is the only reason it is mentioned over here that nature of management we are having. Second point, goal oriented. आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और फिर से बोलता हूँ। गोल ओरिएंटेड होने का मतलब ये सीधा टू बी फोकस ऑन टारगेट। मैनेजमेंट पीपल आर टोटली फोकस ऑन द टारगेट, राइट? अगर मैं इसकी टिपिकल से डेफिनेशन की बात करूँ जो उन्होंने दी हुई है, मतलब लाइक बुकिश डेफिनेशन, इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एम ऑफ ऑल मैनेजमेंट इज ऑलवेज टू अचीव द पर्पस ऑफ अ फर्म और इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, right? The aim must be practical and reachable. Definitely the aim must be practical and reachable. Otherwise what will happen if you people are setting some unrealistic goal, then you won't be able to achieve it, right? Then it will be a kind of problematic situation, right? So we should set some goals which are realistic and practically possible, right? So that was about the point goal oriented. Now we will see about the next point what they have mentioned about in this scenario in nature of management. Okay, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, they work in group, right? They work in group. Okay, whatever activity they're gonna perform, whatever the things they're gonna do, they do in a group, right? मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? चीजों को करने का मैनेजमेंट स्किल, राइट? चीजों को कैसे कर रहे हैं, किसी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज द मैनेजमेंट। एंड फॉर डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ एनीथिंग वी रिक्वायर ग्रुप ऑफ पीपल. That is the only reason it is a group activity, right? It cannot be done by a single individual. ठीक है, कैसा होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, नया कंपनी आपने स्टार्ट किया है, तो सारा कंपनी का काम आप अकेले कर रहे हो, राइट? यू आर द ओनली वन इन द कंपनी हु आर डूइंग ऑल द टास्क, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, तो यू आर एडिंग सम मोर पीपल्स टू द कंपनी, राइट? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग सम मोर पीपल्स टू द कंपनी, राइट? कोई ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, राइट? This is how some more people are adding to the company. Now what you are doing basically, these members will be going to handle different tasks. बराबर है ना? इससे क्या होगा कि एक आदमी का काम नहीं रहा. Now it's a work of group of people. That is the only reason it is mentioned like that. It's a group activity. Okay? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो कि बुकिश है, तो मैं बोलने वाला हूँ उसमें, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एक्टिविटी, राइट? It's a part, right? Whatever group activity we are doing, it's an integral part of it, right? It involves the use of group efforts in the pursuit of well-defined goals, or we can say objectives. It cannot exist independent of the group or organization it manages. So this is how we can say that it's a group activity. Okay. Next point we are having is intangible. Intangible means you cannot see or touch it, right? Management, you cannot see or touch it, right? You just only can get the output result, right? If you're following some process, right? So you cannot actually, what I'm going to say that you cannot just feel it, you cannot just touch it, right? We will get the output result, okay? So you can just feel it in the form of end results and we will get the output. That is why they are intangible in nature. Chalo, next point we're having is continuous process, right? मैनेजमेंट इट इज लाइक ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट? ऐसा नहीं होता कि एक बार कर लिया है, एक बार वी हैव हैंडल द एक्टिविटी, उसके बाद नहीं करना. नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लाइक 2021 की बात करूँ तो रिक्रूटमेंट हुआ, फिर 2022 में भी रिक्रूटमेंट हुआ, नेक्स्ट ईयर 2023 में भी रिक्रूटमेंट होगा गाइस, एंड 2024 में भी होगा, सॉरी. So this is a continuous process the companies are following, the organization is following. So management is an ongoing and never-ending process, right? All the functions of management like planning, organizing, leading, and controlling, etc., both everyone has to be done in continuous manner. ऐसा थोड़ी होता है कि लाइक आपने प्लानिंग कर ली है बस हो गया. नो, प्लानिंग करोगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उस पर चलोगे, फिर आपको कंट्रोल करोगे सिचुएशन को, then only you will be able to get the output, right? So it's a loop, like it's a loop, right? It's a never-ending loop. And it's a continuous process, okay? So this is how we are having the continuous process, okay? So I hope आपको ये 5 पॉइंट अभी तक समझ में आए होंगे जो हमने अभी तक देखा है. किसके बारे में?
मैनेजमेंट के नेचर के बारे में, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और हमारे पास क्या है इसमें। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग परवेसिव नेचर। व्हाट इज दिस परवेसिव नेचर और व्हाट इज दिस like it is just to be present in all type of organization, whether the big one or the small one, or we can say the profit organization or the non-profit organization, but it is to be present in that every organization. That is known as the pervasive. Okay, chalo, next we are having the multi-dimensional thing. The management is a multi-dimensional thing. Okay, management doesn't have a single dimension, guys. Okay, हमें और भी चीज बोलूं तो it includes 3 of the tasks, right? Management of work, management of people, management of operation, right? If you talk about the management of work, right, so they are managing the work, whatever the task they are having as per their goal of the organization, they are managing it, right? And as per the management people, they require various individuals to do that particular task, to do that particular work, right? So they are managing the people also, right? And these people, what they are doing various operations, various tasks to achieve the particular goal set it by the organization. So management of operation is also important. This is how we can say we can see the multidimensional nature of management. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीडायमेंशनल नेचर क्या हो गया, कि क्या क्या कर रहा है मैनेजमेंट। कभी एक ही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा होता है। लाइक अगर कोई टास्क लिया है उसने, तो उसको टास्क को करने के लिए क्या करेगा, वो टास्क को प्लान करेगा, ठीक है, फिर उसमें लोगों को इन्वॉल्व करेगा, लोगों को मैनेज करेगा, फिर लोग क्या करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, राइट। फिर वो लोगों को मैनेज करके काम करवाएगा और लोग क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई रिपेयर करेगा, कोई सर्विसिंग करेगा। सो डिफरेंट पीपल विल बी गोइंग टू डू डिफरेंट टास्क. सो दे विल manage the work, they will manage the people, and they will manage the operation done by the people. So this is how we can see the multi-dimensional nature of the management. I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे हमारे पास क्या है। ओके, चलिए, तो दैट वाज अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अगर फिर से समझना है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको इसके बारे में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं मैनेजर रोल्स के बारे में। ओके, चलो, तो मैनेजर रोल्स के बारे में आपके सामने ये बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम आया होगा, सर्कुलर डायग्राम दिख रहा होगा, आई होप। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 3 बेसिकली रोल दिए हुए हैं। फर्स्ट इज इंटरपर्सनल रोल, राइट। सेकेंड इज डिसीजनल रोल्स, थर्ड इज इंफॉर्मेशनल रोल्स। तो ये 3 रोल आपको दिखे होंगे, राइट गाइस। तो इन 3 रोल का अब मैं बोलूं, ये हो गया मैनेजर रोल्स के अंदर ये 3 रोल आते हैं। इसके अंदर अलग अलग रोल्स हैं। ओके, इसके अंदर क्या है, सबसे पहला हमारे पास अगर इंटरपर्सनल की बात करें तो वी आर हैविंग द लीडर, वी आर हैविंग द फिगर हेड, वी आर हैविंग द लाइजन। ओके, उसके बाद हम बात करें डिसीजनल रोल्स के बारे में तो वी आर हैविंग द नेगोशिएटर, वी आर हैविंग द रिसोर्स एलोकेटर, वी आर हैविंग द डिस्टर्बेंस हैंडलर। फर्दर एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो इन द डिसीजनल रोल्स। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशनल रोल्स की तो उसमें हमारे पास है मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। तो दीज आर द मैनेजर रोल्स प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ओके, चलो मैं इससे डिटेल में आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या चीजें हैं ये। चलिए देखते हैं। ओके, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा जूम करके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी इंफॉर्मेशनल वाली, राइट। इंफॉर्मेशनल जो रोल है हमारा, ठीक है, मैनेजर रोल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशनल रोल है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर इज द काइंड ऑफ रोल। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस इज द function of monitor present in the informational role. Okay, example हम देखेंगे तो it handles the correspondence and information such as industry, societal and economical news and competitive information. This is the monitor. Basically हम लोग क्लास में एक मॉनिटर होता था ना, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो एक क्लास में एक मॉनिटर होता है। What is the work of that guy? He used to observe everything, like, and he used to pass on the internal and external information to the faculty, right? So this is how same happens in the company, or we can say the organization also. They also have the monitor. Okay, chalo, next we are having disseminator. Okay,
Disseminator is the one who is responsible for synthesis, integration and forwarding of information to other members of the organization. Okay, अगर हम इसके बात करें तो इसके एक्टिविटीज के बारे में देखें तो इसका काम है इंफॉर्मेशनल ईमेल्स देना, मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन शेयर करना, कॉन्फ्रेंस का कॉल शेयर करना, वेबकास्ट शेयर करना। आई होप इसकी एक्टिविटीज से आपको समझ में आया होगा कि इसका रोल एग्जैक्टली कैसा होता है कंपनी में। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन का काम क्या होता है? ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, प्लान्स, आउटकम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द फंक्शन ऑफ अ स्पोक पर्सन। अगर हम बात करें इसके एक्टिविटीज के बारे में तो आपको एक्टिविटी देख के क्लियर आइडिया लग जाने वाला है कि भाई एग्जैक्टली करता क्या है। इट अटेंड्स मैनेजमेंट मीटिंग्स, मेंटेन नेटवर्क बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। तो इसको समझ के आपको क्लियर होगा कि भाई स्पोक पर्सन एग्जैक्टली करता क्या है। ठीक है, आप अपनी क्वालिटीज को इनसे मैच करते रहिएगा गाइस, तो उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा आप किस टाइप के मैनेजर रोल्स में आ रहे हैं और किस टाइप के पर्सन है। आगे जाके हम मैनेजमेंट स्किल जब पढ़ेंगे मैनेजर स्किल्स के बारे में तब आपको समझ में आएगा। तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मैनेजर बनने के लायक है या नहीं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि कोई है या नहीं, बस आई एम सेइंग कि whether you people are having the skills inside you or not. Okay, चलिए next point we are seeing about is in role in interpersonal role, right? उसमें सबसे पहले हमारे पास है figurehead, right? Figurehead is like who is the figurehead of the company or organization? Symbolic leadership, duties involving social and legal matters. He is the figurehead. Okay, people know the company why this figureheads only, right? ठीक है, जैसे मैं इलॉन मस्क की बात करूँ, is the owner of Tesla or we can say various company like that. So उनका वो एक फिगर है कंपनी के। ठीक है, रतन टाटा जी की बात करूँ तो he is also a figure of Tata Industry. अंबानी जी की बात करूँ he is also a figurehead, right? So this is how we can see the figurehead. What they used to do exactly, what their activities they are doing. Very first in that we are having they attend the ceremonies, greet visitors or organizes and attend events with clients, customer, bankers and etc. Like that these activities are done by the figurehead. Next we are having the leader in the list. Okay, leader means what? Team leader guys. लीडर का दिमाग में सीधा सा आप समझो टीम लीडर, तो उससे इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग हमारा। ठीक है, तो टीम लीडर का काम क्या होता है? इट मोटिवेट्स, इंस्पायर्स एंड गाइड एम्प्लॉय फॉर देयर एक्शन एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स अप्रोप्रिएट स्टाफिंग। ओके, so this is the activity or we can say function done by the leader. Parallelly, if you go and see the example activity, they are having the build trust relationship with employees, build effective teams, manage conflicts. So this is how the activities are mentioned for the leader. They are coming into the interpersonal skills. Okay, chalo. Next we are having the liaison. Okay, liaison is having the function to build and maintain relationships between the organization and outside entities. Okay, so what they basically activity they are doing, they work with external boards. Okay, what they are doing, they are working with external boards, create and maintain social network with key stakeholders. Okay, they are basically the one who are building the relationship between the organization and the outsiders. Okay, this is how the liaison is playing important role in management. चलो, I hope आपको informational और interpersonal समझ में आ गया होगा. Next we are having in this decisional. Okay, so in decisional we are having the entrepreneur. Okay, so entrepreneur, what he is doing, his function is to scan the organizational environment for opportunity. Okay, foster creativity and innovation. This is the function of the entrepreneur in the organization. अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो it has the activity to participate in strategy and review meetings of new projects and continue the environment. Okay, continue the creative environment for the improvement of the employees. Okay, this is how the entrepreneur is having the functional role in the organization. Okay, next we are having the disturbance handler guys. As the name suggests, it manages the organizational problems and crises. क्या करता है ये disturbance handler? It manages the organizational problem and crisis. Okay, further it participates in, if you talk about activities, it participates in strategy and review meetings that involves problem and crisis, get involved directly with key issues and people, right?
This is the activity done by the disturbance handler. For the resource allocator, as the name suggests, it's having the responsibility also, like take responsibility for allocation of all types of organizational resources. Okay. Further, what they are doing is that creating work schedules, make authorization whenever it requires, participate in budgeting activities. This is the activity done by the resource allocator. Last, we are having negotiator. As the name suggests, represent the organization during any significant negotiation. Okay. Chalo. Further, if you talk about the activity of this negotiator, it negotiates with a vendor and client, settle a dispute about resource allocation. So I hope आपको ये 3 स्किल समझ में आई होगी, उसके साथ साथ आपके इसके अंदर के रोल समझ में आए होंगे और उसकी फंक्शन समझ में आ गए होंगे. ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस. ओके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा इंफॉर्मेशनल स्किल के बारे में. उसके अंदर हमारे पास रोल्स में मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक पर्सन था. ठीक है, फिर इंटरपर्सनल के बारे में हमने देखा, उसमें हमारे पास फिगर हेड, लीडर, लाइसेंस था. देन हमने डिसीजनल के बारे में देखा, तो उसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर था. So that was about the मैनेजर रोल्स गाइस. ओके, अभी हम लोग उसको वन बाय वन करके देखेंगे, आगे देखते हैं क्या है कैसा है. फिर देन वी विल सी अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स आल्सो, मैनेजर स्किल बेसिकली. ओके, चलिए. सो नाउ वी गोना सी अबाउट मैनेजर स्किल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन चेक आउट फॉर दिस थिंग्स फॉर योरसेल्फ आल्सो. आप चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी स्किल है, और इफ यू वांट टू बी अ मैनेजमेंट इंडिविजुअल यू कैन इंप्रूव दैट स्किल एंड बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, happily, I mean to say that we can be part of the management happily, right? First in that skills we are having the technical skills. Okay, then we are having the human skill, then conceptual skill and diagnostic skill. ठीक है, कौन कौन से स्किल्स है हमारे पास मैनेजर स्किल्स के अंदर? टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल एंड डायग्नोस्टिक स्किल. आई होप आपको ये स्किल के नाम समझ में आए होंगे. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला जो स्किल है टेक्निकल स्किल. टेक्निकल स्किल मतलब क्या? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. ओके, और रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो दैट कैन बी सेड एज द टेक्निकल स्किल अंडरस्टैंडिंग इन द मैनेजरियल स्किल्स. चलिए, इसका जो डेफिनेशन जो बुक के हिसाब से है, दैट इज द टेक्निकल स्किल बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफिशिएंसी in a specific type of activities involving methods, processes or techniques. Example, those who can be of engineer or of doctors. Application of specialized knowledge or expertise acquired through formal training and its use. So that can be said as the technical skills. Okay, चलिए, next we are having the human skills. Human skills मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के साथ रहना भी है आपको और लोगों के साथ काम भी करना है विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन गाइस. ओके, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. ओके, विद some individuals or we can say some group of people, like. So if you see about like human skill, it is the ability to work with people, understand and motivate groups and individuals. It also involves the activity to effectively communicate with others so as to influence their behavior. What they are doing, they are motivating the people, you are understanding the people. Okay, and you are molding themselves, okay, as per the requirement of the task. मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो आपको मालूम है किसी इंसान से कैसे काम लेना है. दैट्स इट. बहुत सिंपल सोबर बोल रहा हूँ मैं. आपको आता है किसी से काम कैसे लेना है, आपको आता है कैसे मोटिवेट करना है, आपको आता है किसी के साथ कैसे बॉन्ड बना के रखना है. दैट कैन बी सेड एज द ह्यूमन स्किल. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी गोना सी अबाउट द कंसेप्चुअल स्किल. कंसेप्चुअल स्किल में हमारे पास क्या है? लाइक यू आर देखो मैं सीधा से समझाता हूँ. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द थिंग्स. ठीक है, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, यू आर एबल टू एनालाइज, यू आर एबल टू डायग्नोस, ओके, एंड थिंक थ्रू द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. Understand your mental stability, or you can say your mental ability is that much strong, you're easily able to diagnose or recognize or analyze anything. ठीक है, that can be said as the conceptual skills. Okay, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो.
Conceptual skill involves the ability to understand complexity of the whole organization and how changes in any one part of the organization affect others. Right? What they are doing, they're understanding how changes in one part of the organization is affecting others. Okay? This knowledge permits the managers to act accordingly to the objective of the total organization rather than on the basis of needs of the problems at hand. Right? The success of decision depends on conceptual skill of manager. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ द सक्सेस ऑफ डिसीजन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल स्किल्स ऑफ मैनेजर हु मेक्स डिसीजन. देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्कआउट कर दिया मैंने, आप ध्यान से समझ लो इसको. चलो नेक्स्ट, द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ टॉप मैनेजर मेक अप एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनालिटी व्हिच डिस्टिंग्विशेस गुड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर्स. राइट? तो इन दैट वी आर हैविंग दिस पॉइंट. अब जैसा कि मैं आपको पहले बोल भी चुका हूँ, मेंटल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एनालाइज, डायग्नोज एंड थिंक थ्रू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन that are coming into the conceptual skills. ठीक है, आई होप आपको conceptual skills समझ में आया होगा.